More than 150 prop firm accounts blown in just one single year, and I'm close to buying 200 accounts now. Can you believe that? I've spent more than $35,000 on these prop firm challenges, which is close to 30 lakh INR. Now it sounds like a complete failure, right? But the fun fact is, I recovered all of that money just from 2 or 3 accounts. In the last 20 days, I made more than 50% of what I paid for these accounts in Tattoo just from one single prop firm account. Just from one single Funding Pips 100K account. See, I'm not here to flex. I'm not here to sell you anything. The only reason I'm making this video is because people quit too early. लोग 5-6 अकाउंट्स ब्लो करके बोल देते हैं भाई मेरे बस का तो है ही भाई, अगर इतना ईजी होता तो हर कोई ना प्रॉफिट कर लेता. See, the reason I blew more than 150 accounts is because I was doing everything wrong. There was no process, no structure, random trades, no journaling, nothing. बस buy और sell कर रहा था just for the sake of 2 minutes कि भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ. कुछ भी नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं फॉलो करना. और इससे I was not only losing my money, I was losing my physical and mental health as well, जो कि बहुत important है. But something changed recently. In the last 2 months, I changed one thing in my strategy, and that completely changed the whole game. Just one shift in that strategy changed my accuracy from 30-40% to 60%. And I'll share that thing in the coming videos. I'll share my whole strategy in the coming videos. Now, before you think ये बंदा वैसे रैंडम कुछ भी बोल रहा है, 150 अकाउंट्स कौन ही खरीदता है, let me show you the proof. So here you can see the stats, total challenge cost. यहाँ पे the total accounts so far are 184 accounts, and the total amount I've spent is over $35,000, which is close to 30 lakh INR. And now here's a fun fact. These are the payouts I received, which is more than the amount I paid for the total challenges. वह आप देख सकते हो यहाँ पे 38,000. And just to get it, Funding Pips से recently I got it around $16,000 in January alone. तो भाई आप देख सकते हो 50% recovered with just one prop firm account. और ये भी अगर आपको एक्सेल शीट नहीं समझ में आ रही तो look at this. Let's go to Funding Next dashboard. You can see my transactions. The first account I purchased was on 21st of October 2024. And if you go to last transaction, आप देख सकते हो भाई 110 अकाउंट्स तो सिर्फ Funded Next से ही है. सिर्फ एक prop firm से 110 अकाउंट्स. Last purchase was on 7th of January 2026. And total payouts from Funding Next are $14,600. It close to I think 12 lakh INR. And talking about Funding Pips, तो भाई इस पे मैंने अब तक $18,000 के रिवॉर्ड्स रिसीव कर लिए हैं. Just look at this. In January itself, I've received around $16,500. और ये सिर्फ एक prop firm अकाउंट से. I can show you the stats here as well. ये मेरा मास्टर अकाउंट था. And just look at this dashboard. Week 1, $3,900. Week 2, $4,800, $5,100, $35 and so on. ऑन डिमांड पे आउट था, इसीलिए बैक टू बैक विद इन अ वीक पे आउट्स आ रहे थे. द रीज़न व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस स्टैट्स इज व्हाट इट इज व्हेन द गेम टर्न्स, इट टर्न्स सो फास्ट. 2-3 अकाउंट्स बहुत हैं सारा लॉस रिकवर करने के लिए, एक बार आपने कंसिस्टेंसी पकड़ ली. कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. See, I don't know where you are in your trading journey, whether it's been few months, a few years, and if you're still losing, it's okay, just do not stop. Believe in yourself. एक दिन ऐसा आएगा भाई जब आप भी एक दिल का एक मंथ का 15-20 लाख आराम से बना लोगे पे आउट से. And let me tell you the most important thing to become a profitable trader. You guys already know it, but you're too lazy to do it. You're right, it's journaling. Journaling is the most important thing you can do to become a profitable trader. And it takes less than 30 seconds by to journal one single trade. अगर तुम्हारे पास 30 seconds भी है ना, 30 seconds भी नहीं है ना एक ट्रेड जर्नल करने के लिए, तो रहने दो भाई, छोड़ दो. इतने आलसी हो तुम, मत करो ट्रेड. You don't need any fancy setup, any fancy software, कुछ भी नहीं चाहिए. एक एक्सेल शीट पे आप जर्नल कर सकते हो. And I'll show you how to do that. बट अगर नहीं कर सकते जर्नलिंग भी भाई, तो रहने दो, तुम्हारे बस की है ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते ट्रेड.
Now why I'm saying journaling is so important, क्योंकि भाई मैंने अकाउंट्स ब्लो ही तब किए हैं जब मैं जर्नलिंग नहीं कर रहा था। रैंडम सेटअप्स, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, कोई एक फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि जर्नलिंग थी नहीं तो मेरे को पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। तो भाई जिस दिन आपने जर्नलिंग स्टार्ट कर दी आप देखोगे क्या मेजर ट्रांजिशन आने वाला है आपकी जर्नी, एंड दैट्स व्हेन योर रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी विल स्टार्ट। तो भाई अगर टाइम पास करना है ना करो, पैसे उड़ाओ मार्केट में आके, जब मुँह उठा के मन किया ट्रेड कर लिया और निकल गए मार्केट से, यही लूप चलता रहेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल कभी बन ही नहीं पाओगे। मैं लिख के देता, बट अगर सच में प्रॉफिटेबल बनना है ना तो स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ सीरियस बिजनेस। So in the coming videos I'll be talking a lot about journaling. I'll be sharing my complete strategy and that one single shift in strategy that changed my percentage by my win rate from 30-40% to 60%. That too with the risk reward of 1:2 at least. There's no fake motivation, only practical stuff. See, in 2026, my goal is to reach $100,000 in payouts every single month consistently, and I'll do it with you guys. By 1 crore per month from Propform accounts is not that difficult. I mean, it's also not easy, but it's very much possible if you stick to your process, if you focus on one single strategy, and most importantly, if you journal. So if you're serious about trading, stay tuned. A lot of value is coming your way. I'll see you in the next one. Peace out.